Next question is, following are some of the characteristics of animals. Diets heavy on fruit, white fur. Some characteristics are given to you. You have to determine whether each of these characteristics is in adaptation for tropical rainforest or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both regions? आपको कुछ characteristics दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये characteristics tropical rainforest के लिए है या फिर polar regions के लिए है. Clear? So when we were reading the chapter, I told you that diets heavy on fruits. जहाँ पर animals fruits की diet लेते हैं, that is tropical rainforest. Next is white fur. White fur कहाँ पर होते हैं animals के? Obviously polar regions में होते हैं. उसके बाद need to migrate. Animals कहाँ के migrate करते हैं? That is polar regions. Polar regions के animals migrate करते हैं. Reason is clear to you. Polar regions के birds migrate करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, extreme climatic conditions हो जाते हैं. उसके बाद loud voice. Loud voice कहाँ पर होती है animals की? That is tropical rainforest. Tropical rainforest. उसके बाद sticky pads on feet. Feet पर sticky pads कौन से कहाँ पर होते हैं animals के? That is tropical rainforest. मैंने आपको बताया था कि sticky pads होते हैं जिनके कारण easily वो trees पर climb कर जाते हैं. Next is layer of fat under skin. Fat की layers skin के नीचे किसकी होती है? That is polar regions में जो भी animals होते हैं, हमने polar bear के बारे में पढ़ा था, उनकी skin के नीचे क्या होता है? Fat की layer होती है. I think now it is clear to you. It is visible to you. ठीक है? Layer of fat under skin. पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है. वाइड एंड लार्ज पोज कहाँ पर होते हैं एनिमल्स के? पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनके लार्ज पोज होते हैं. उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं उनके ब्राइट कलर्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग टेल्स कहाँ पर होती है एनिमल्स की? दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जैसे मैंने आपको बताया था मंकीज की होती है. लार्ज एंड लॉन्ग बीक कहाँ पर होती है? दैट इज ऑल्सो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नो नन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स. आपसे ये पूछा गया था कि सपोज लॉन्ग एंड लार्ज बीक है तो क्या ये पोलर रीजन्स वाले एनिमल्स भी अडेप्ट मतलब दोनों रीजन्स में एप्लीकेबल हो सकती है? नो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है? एनिमल्स ज़्यादा नंबर में रहते हैं. कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दिस लार्ज पॉपुलेशन? आप क्या रीज़न बता सकते हो कि इतने ज़्यादा लार्ज नंबर में एनिमल्स क्यों रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? Because the climate of tropical rainforest is generally hot and humid with continuous rain. Tropical rainforest में क्या होता है? जो climate होता है hot और humid होता है और continuously rain होती रहती है. These hospitable climatic conditions support large populations of plants and animals. और ये जो climatic conditions हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा plants और animals की variety sustain कर सकते हैं. Next is explain with examples why we find animals of certain kinds living in particular climatic conditions. You have to explain with examples that
why we find animals of certain kinds living in particular climatic conditions. As we know, certain kind of animals can be found in certain climatic conditions as they can adapt well to those conditions. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही रहने के लिए अडेप्टेड है, जैसे पोलर बियर है. पोलर बियर इज अडेप्टेड टू पोलर रीजन्स. पोलर बियर पोलर रीजन्स में ही रह सकता है. इट हैज़ अ थिक स्किन एंड लेयर ऑफ फैट बीनीथ द स्किन टू कीप इट वार्म इन कोल्ड कंडीशंस. उसकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है फैट की जो उसको गर्म रखती है कोल्ड कंडीशंस में. हाउएवर, with these adaptations, polar bear cannot survive in tropical regions where the climate is cold. और इन adaptations के साथ polar bear tropical region में नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, hot climate होता है. Suppose polar bear की body पर क्या है, बहुत लॉन्ग फर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी फर्स है, कवर्ड है, तो वो क्या करती है, वो उसको हीट पहुंचाती है ताकि वो ठंड वाले क्लाइमेट में रह सके. बट अगर आप उसको ट्रॉपिकल एरियाज में छोड़ दो जहाँ पर ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? नो. सिमिलरली, monkey is adapted to live in the forest with features like a long and sturdy tail, loud voice, etc. These features are of no importance in polar regions where vegetation is very less. Therefore, certain type of animals can survive only in certain climatic conditions. तो और अगर monkey को आप polar areas में छोड़ दो तो he will also not the monkey will not be able to survive in the polar regions, no, because it has long and sturdy. उसकी tail काफ़ी long होती है, ठीक है, और loud voice होती है. इन characteristics का I don't think कि polar regions में कोई काम होता है, नहीं होता ना क्लास. तो इसलिए जो एनिमल्स की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको सर्टेन एरियाज में रहने के लिए ही अडेप्टेड है. हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ? एलिफेंट्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं वहाँ के एरियाज के अकॉर्डिंग. The elephant has adapted remarkably to the conditions of the tropical rainforest. Some of its adaptations are as follows. कुछ आपको adaptations दे रखी है. It uses its trunk as nose so that it has a strong sense of smell. Elephant क्या करता है, अपनी trunk को use करता है as a nose, तो उसकी काफ़ी strong sense है smell की. Its trunk is also used for picking up food. जो एलिफेंट है अपनी ट्रंक को यूज़ करते हैं खाना उठाने के लिए. इट्स टस्क आर यूज टू टीयर द बार्क्स ऑफ ट्रीज. इट कैन ईट बार्क्स ऑफ ट्रीज. उसके जो टस्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज की बार्क को टीयर अप कर देते हैं जिसके कारण वो ट्रीज की बार्क खा सकता है. द सोल्स ऑफ इट्स फीट आर कवर्ड विथ थिक पैड्स. जो उसके फीट की सोल्स है वो थिक पैड से कवर्ड है. These pads can handle its enormous weight. और ये जो pads है वो क्या करते हैं, एनिमल की बॉडी का वेट हैंडल कर पाते हैं, ठीक है. They also block the sound produced by feet so that elephants can move silently. Its large ears have strong sense of hearing. जो उसके इतने बड़े बड़े ears हैं उसके कारण वो क्या कर पाता है, आसानी से सुन पाता है, ठीक है. So these all were your question answers, NCERT question answers which are covered. I will attach a PDF along with the video to you. Okay. So I hope this must be clear to you.
So now we will study about climate and weather. Today, we are likely to experience light showers of rain. तो सी क्लास, एक वेदर फोरकास्ट हुआ कि आज रेन होने वाली है, तो इस गर्ल को खेलने जाना था, ठीक है। तो अब इसने देखा कि ऐसे कैसे बारिश हो सकती है, आज तो सनी डे है, ठीक है। तो फिर ये खेलने चली जाती है, बट अचानक से आप लोगों ने देखा बारिश होने लग गई। अब इसने क्या कहा, इट वॉज सनी ऑल दिस वाइल, हाउ डिड इट रेन, आई गेस वी कांट ट्रस्ट द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट होना चाहिए यहाँ पे क्लास, नो वी कैन नॉट ट्रस्ट द वेदर, वेदर कंडीशंस चेंज होती है डेली, ठीक है। No, Annie, that's not the climate that changed, it's the weather. Let's learn more about these changes in the environment. That's perfectly true, Annie. Weather is the day-to-day changes that take place in the environment. So class, what is weather? It is the day-to-day changes that take place in the environment. Weather could even change in a matter of minutes or hours. So, how does one find out about the weather? This task is taken care of by the meteorological department. They collect information on the temperature, wind, and other factors, and predict the weather for the week. Excellent, Annie. The weather is based on factors such as temperature, sunlight, humidity, rainfall, and wind speeds. So it is clear to you what all are the factors on which weather is based. That is temperature, sunlight, humidity, rainfall, and wind speed. Of a particular location. These are known as the elements of the weather. Have you visited a place near the sea, or a mountain region, or for that matter, a desert? Do you think the weather is the same in all these places? Discuss this amongst yourselves and share your ideas. Once you're done, click the continue button to proceed. The average weather condition prevailing in an area over a long period of time. This we have already discussed. What is climate? The definition of climate is that the average weather conditions that are prevailing in an area over a long period of time, that is known as climate. A 25 to 30 years is known as the climate of that area. This is the reason why we say Greenland has an Arctic climate
with cold winters and mild summers. Did you know that the prehistoric mammals like the mammoths and the saber-toothed tiger became extinct because of changes in the Earth's climate? Earth's climate has been changing gradually over 5 billion years. Around 30,000 years ago, North America was covered by thick ice sheets. This was known as the Ice Age. Due to warming up of the Earth, the changes in climate resulted in the melting away of ice. By around 7,000 years ago, the ice had completely melted. This end of the Ice Age caused the extinction of many species like the mastodons, the woolly mammoths, the stag moose, and the saber-toothed tiger that preferred cold climates and could not survive in the warmer, drier conditions. Yes, we definitely can change the climate, Annie. We all know that the atmosphere contains gases such as water vapor, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, and methane, known as the greenhouse gases. These gases allow the heat of the sun to reach the surface of the Earth and also help to absorb a little heat released from the Earth into space. This keeps the Earth warm and suitable for life. But the pollution from our vehicles, the clearing up of forests, dumping of wastes in the oceans increases the amount of greenhouse gases in the atmosphere, which absorbs more heat released from the Earth and thereby makes the Earth warmer. तो आप लोगों को क्लियर हो गया? जो गर्ल थी उसने पूछा कि हम क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं एक एरिया का. यस, डेफिनेटली वी कैन चेंज द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. We can change the climate of the earth. How can we change the climate of the earth? You can see that आजकल कितना pollution है. You know ना, क्योंकि बहुत सारे vehicles हैं और भी बहुत सारी day to day activities हम ऐसी करते हैं जिसके कारण pollution create होता है. And greenhouse gases जो है increase होती जा रही है atmosphere. Is it clear to you? जिसके कारण जो earth का temperature है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे. This is known as global warming. Let's look at what we have learned so far. Weather is the day-to-day changes that take place in the environment. The average weather pattern in a region recorded over a long period of time is known as the climate of that region. See, आप देख पा रहे होंगे कि फेज टू फेज टर्न हो रहा है, ईयर टर्न हो रहा है. 2010, 2009, 2008. तो क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर पैटर्न इन एन ईयर, इन अ रीजन. और वेदर क्या है? वेदर आर द डे टू डे चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड सनलाइट. इज इट क्लियर टू यू?
Tuffy is perfectly fine, Annie. The fur on his body keeps him warm during cold weather. Let's look at how animals adapt themselves to the changes in climate. Animals have special adaptations that help them survive in a specific habitat. Let's take the example of the polar bear. In the polar regions, the temperature drops as low as -37 degrees Celsius. To suit this environment, the polar bear has a thick layer of fat under its skin. This allows it to keep it warm. This thick fat content increases its body weight, because of which it cannot walk too fast and needs to rest to avoid overheating of its body. The white fur on its skin camouflages it with the surrounding, which protects it from predators and also helps it to catch its prey. During summer in these regions, the polar bear goes swimming to cool its body. The wide and large paws help it not only to swim very well, but also help it walk easily in the snow. On the other hand, the penguins do not have a thick fur coat on their body, but are always found huddled together to keep themselves warm. They have thick skin and thick layer of fat to keep their bodies warm. Like the polar bear, the penguins are good swimmers too. Their webbed feet and streamlined bodies help them swim with ease in the ocean. Unlike the animals, the birds in these regions cannot tolerate the cold weather and hence find other ways to protect themselves. Did you know that the Arctic tern travels 15,000 kilometers to come and lay its eggs? Birds cannot survive the cold and hence travel to warmer regions till the winter ends. This is known as migration. One common destination for these migratory birds is the Vedantangal Bird Sanctuary in India. तो क्लास आज हमने डिस्कस करा पोलर रीजन्स तक. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. और आज हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे. कल हम इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे. क्लियर है आपको? ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाए. इज इट क्लियर टू यू पीपल? ओके, थैंक यू.